Reporting from the Saryu Ghat in Ayodhya right now, and it's an absolute privilege for everybody who comes to Ayodhya to attend the Saryu Aarti. The Saryu Ghat right now, you can see it's lit up and it is so beautifully decorated, especially ahead of the Pran Prashishtha ceremony. And this is the Saryu Aarti. 5 priests performing the Aarti right now, you can see, and there are hundreds of people who have gathered up here. The chanting of mantras and the Aarti is taking place right now. There are hundreds of people who have turned up here at the Saryu Ghat. This is near the Ram ki Paidi, of course, and one of the most important sites. Shri Ram believes that the Saryu river is a holy river where anyone who wants to wash away all his sins, wants to gather the punya of all the pilgrimage, should take a holy dip in the Saryu river. And you can see it's a completely Ramamay atmosphere here at the Saryu Ghat. Republic TV getting you the exclusive inputs ahead of the Ram Temple inauguration and getting you how electrifying is the atmosphere of Ayodhya ahead of Ram Lalla's consecration, the Pran Prashishtha ceremony. It's a 500-year wait, viewers, and day by day we see the bhakti, the emotion of bhakti, the devotion is only and only increasing, viewers, day by day. With video journalist Ranbir, this is Rakshita Mishra reporting for Republic TV from Ayodhya. So that was a mesmerizing view indeed that I got to witness at the Saryu Ghat. But right now, I will show you a report filed by my colleague Mayuk, who was getting us all the inside details from the Ram Temple. You know, offerings have come. Prasad is a very important part of the Hindu culture, the Sanatan Dharma, and it's a feast, of course, for the inauguration ceremony. Prasad has come from all parts of the country. So here's a report for more on that. Well, right now I am in Ram Mandir, Samagri Bhandara. This is the place where all the gifts that are coming in Ram Mandir are being kept, and this is the place where all the ghees, the water from different rivers of India, the purified sense and the gifts are being kept. The idols are also being kept. You can see water coming from Janakpur, from Nepal, from all the rivers of Nepal. This has been sent by the Nepal government along with the Indian bhakts. They have collected water from all the rivers of Nepal, and this is here the murti of the Shiv Parvati is here. This has also been gifted. All this other things that are here, the idols, the vigrahas, this have been gifted. The Gada has been gifted from some states, and this is the entire stretch of this place is a storeroom of all the gifts that the people from all across the world have actually gifted. The Trishul has been gifted, and also I'm joined by the Vice President of ISKCON, the spokesperson of Kolkata ISKCON. Actually, a thought came that the residents of Ayodhya did a great injustice to Mata Sita. So although Bhagwan Ram, he is coming back after 500 years Kali Yugi Banvas, but we should think about Mata Sita also, because Sita Mata was also exiled from Ayodhya, and it is almost 8,70,000 years. So we thought that this is very, very important occasion when Lord Ram is coming. So what is stopping us to unite Mata Sita again with Lord Ram? So in that mood, I started my journey in a car. I didn't took my driver. I just drove, and then I went to Nepal, collected the waters from different kunds associated with Sita Maiya. Of course, we were getting you more updates. My colleague Priyanka has filed a report on how more than 100 kilograms of camphor has reached the Ram Temple for the grand ceremony of the Ram Lalla idol consecration.
from across the country, from Jammu and Kashmir to Kerala, from Assam to Gujarat, people are in fact bringing something or the other for Lord Ram. And in fact, several of them had been assigned a few tasks for Lord Ram as well for the 22nd of January. Behind me right now is the kapoor or the camphor that would be used in the Pratham Aarti, the first Aarti that will be carried out of Ram Lalla, the new idol, the consecration ceremony that will be carried out with this camphor that is being brought from Telangana. In fact, let's try to speak to the people who are joining us, who've made this journey to come to Ayodhya and then in fact brought this a lot of boxes of camphor. Let's try to understand how their journey has been and what exactly they have brought. Sir, बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को क्या कुछ आप यहाँ पर लेकर आए हैं, कपूर आप लेकर आए हैं प्रथम आरती के लिए, थोड़े डिटेल्स हमें बताइए। जी, हम जो है 18 तारीख को जो है दोपहर में जो है वहाँ से रवाना हो चुके हैं अयोध्या के लिए और कल रात तक पहुँचे। हम 2 दिन लग गए हमारे को पहुँचने के लिए। लगभग 17 लोग आए और श्री राम सेवा दल के ओर से हैदराबाद से जो है यहाँ पर अयोध्या पहुँचे हैं और श्री राम जन्मभूमि में जो अयोध्या का राम मंदिर जो है बन चुका है और 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उस अवसर पर जो है हम जो है कपूर 108 किलो कपूर राम सेवा में जो है समर्पण करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। 108 की क्या खासियत है? 108 केजी हम आप देख रहे हैं, आप कपूर लेकर आए हैं और ये प्रथम आरती में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो है जपमाला भी 108 का रहेगा, उसी तरीके से जो है 108 किलो का कपूर जो है हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो इसको कब इस्तेमाल किया जाएगा और पूरा कब इसको यूज किया जाएगा मंदिर के अंदर? हमारा जो यही मानना है कि जो है राम जी का जो है राम लला जी का जो है मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी समय पर जो है जो आरती राम जी को जो है आरती जो है उतारते हैं, उसी समय पर प्रथम आरती के तौर पर हमारा 108 किलो का जो है राम जी की सेवा में जो है आरती करने के लिए सेवा में जो है समर्पण अर्पित करते हैं। सर, आप भी बताइए, कुछ आप लोग तेलंगाना से आए हैं, किस तरह से वहाँ पे भी माहौल है अयोध्या को लेके, किस तरह से देखा जा रहा है 22 जनवरी को? हर पूरे देश में हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन हो रहा है, एक जश्न का माहौल। So this essentially is, the kind of camphor that has been brought in and 108 kgs of camphor that has been brought in here. And of course, this will also be used in the first Aarti that will be carried out of Ram Lalla as well. With video journalist Pipin Mori, I'm Priyanka Sharma reporting from Ayodhya for Republic. A very, very short break, viewers. We are reporting live from the Ram Ki Pedi, and of course the beautiful light show is currently underway with Ram bhajans in the background in sync with the different lightnings. We will be coming back after a very short break. Don't go anywhere. Following a tragic boat capsize in Vadodara that claimed the lives of at least 16 individuals, including 14 students, authorities have filed a case against 18 individuals in connection with the incident. One person died after a massive fire broke out in a container truck in Thane. The authorities have sent the mortal remains to the hospital for post-mortem. All Kamtapur Students' Union members blocked the railway line near Betkara railway station in Jalpaiguri, West Bengal. The Students' Union demanded for a separate state of Kamtapur. At the 54th meeting of World Economic Forum, Union Minister Smriti Irani lauded Prime Minister Narendra Modi's development mantra and said that in his 10 years of administration, PM Modi made women the center point of development. भारत की सबसे प्रमुख प्रतिभा भारत की महिला को नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के प्रशासन में विकास का केंद्र बिंदु बनाया। डावोस, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लगभग 5 दशकों से चल रहा है, यहां विश्व भर के सबसे बड़े व्यावसायिक समूह के प्रतिनिधि आते हैं।
वर्तमान में इस डावोस में 300 से ज़्यादा भिन्न भिन्न राष्ट्रों के मंत्री आए हैं और जितने भी ग्लोबल पावर हाउसेस हैं वित्तीय दृष्टि से वो डावोस में आकर नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं. Amid the freezing temperatures in our national capital, Indian forces prepare for the 75th Republic Day celebrations. The parade rehearsals are underway at Kartavya Path in New Delhi. With temperatures staying low, Delhi experiences a cold wave and dense fog enveloping the national capital. The dense fog situation has caused low visibility, due to which several flight operations are delayed and few others have even been cancelled. The White House is closely monitoring the escalating tensions between Pakistan and Iran. National Security Council spokesperson John Kirby said that the White House does not want to see an intensification of conflict in the region. UN Chief Antonio Guterres is concerned about the escalation between Iran and Pakistan and called for any issues between the two countries to be addressed through peaceful means, through dialogue and cooperation. Rockets between Iran and Pakistan. We've seen reports of casualties on both sides. Again, he urges both countries. The BJP party in the state of Karnataka have gone ahead and launched a huge, massive campaign stating that selfie with My Rama as well. And they have also gone ahead and created photo booths. You can clearly go ahead and look at photo booths as well, where BJP karyakartas, cadres, and many of its prominent leaders are going ahead and clicking selfies with it. It clearly shows selfie with Nanna Rama, meaning to state that selfie with My Rama, hashtag Nanna Rama, hashtag My Rama is what is being stated over here as well. And we are seeing one of the BJP's functionary who's going ahead and clicking a photo over here as well. And the BJP party has come with this unique concept to go ahead and upload all these photos on the website as well. So this clearly goes ahead and shows the sort of unique campaigns that the Saffron party is coming over here and going ahead and encashing it too. And they also not only have the image of Lord Rama, but they also basically have a structure of how the Ram Mandir would look once it is completed. We also have several people who are here as well, because they've also come up with a unique concept. I would want my video journalist to come across and just focus on this QR code. This is a very unique QR code where once you scan it will take you to the portal as well. Just go ahead and focus on this mobile phone. You can go ahead and see it. This particular QR code has already been scanned now. It is taking you to a website. So the website basically has your details of name, phone number, the assembly constituency, and the photo that you can go ahead and choose from. And the photo will be uploaded on this particular portal where you can go ahead and see. He just now clicked a photo with one of the BJP functionaries. He's going ahead and doing all the basic details over here. He will be uploading it shortly as well. So this is the sort of, unique concept that is coming in. I will happy. People are celebrating and rejoicing, cutting across party lines, cutting across communities over here. And this in itself shows as to how this is a marquee event. This is very important for each and every Indian, not only in India, but also across the entire world. With video journalist Sadan and Prajwal Prasad reporting for Republic from Bengaluru. More
Moitra got no relief from the Delhi High Court as she approached Delhi High Court to allow her to stay in her official residence, which is 9B Telegraph Lane. But today, Moitra, the expelled member of Parliament of TMC, who she was expelled from the Parliament on 8th of December 2023, and today her official residence, government residence, have been completely evicted, and clearly could be seen the visuals as the police officials are right now here outside the residence of Moitra. In fact, the officials from the Directorate of States are also outside the residence of Moitra. The key of her residence have been officially handed over to the officials of Directorate of States earlier. Also, the first time when Moitra approached Delhi High Court clearly stated Moitra that she should request Directorate of States to allow her to stay in her official residence 9B Telegraph Lane. These are the visuals outside her residence. We could clearly see that some of the laborers are also standing outside her residence as they were called early in the morning to shift all the stuff from Moitra's residence to some other location. Right now, the entire house has been completely vacated by Moitra. The keys has been handed over, but we also could see the official vehicle of Moitra still standing outside her residence 9B Telegraph Lane. But this residence now no more belongs to Moitra. Morning at around 9 a.m. the shifting process started in the house of Moitra. She started shifting her stuff from her official residence 9B Telegraph Lane. Now this house is completely vacated and evicted by Moitra. She was expelled for her because there were serious allegations of the cash for curie, and also that she exchanged money in exchange for questions to the Shri Nandani Business Conglomerate Ethics Committee found the There are a lot of dignitaries that have been invited, but of course there are a lot of saints and seers as well who are pouring into Ayodhya. In fact, there are tribal leaders as well who are joining us here in Ayodhya. आप कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से यहाँ पर आप आए हैं अयोध्या में, और किस तरह से 22 जनवरी में आप जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें आप भाग लेने वाले? ठीक है, हम तो हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ हमारा पास निमंत्रण गया था, और जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है मैं हिंदू परिषद का सदस्य हूँ। अभी वर्तमान में आचार्य हूँ, अखिल भारतीय रामनवमी महासभा की आचार्य हूँ, कोषाध्यक्ष भी हूँ, और पहले पूर्व में अध्यक्ष था, उसके पूर्व महामंत्री था, ग्राम पंचायत का सरपंच भी रहा 6 साल तक। अब मैं जब से राम नाम लिखाया हूँ तब से मेरा तो आने जाना 10वां बार है अयोध्या आना। यहीं से राम नाम लिखा गया था मैं, जो आपने लिखवाया हुआ है अपने चेहरे? जी हाँ, यही अयोध्या में लिखाया। 1961 में मैंने राम नाम लिखाया। मुझे अभी 60 वर्ष हो गया, 60-61 वर्ष हो गए लिखाया। और भजन जहाँ होता है, हमारा भजन सम्मेलन को छोड़ के आया हूँ मैं। ऐसे महायज्ञ होता है हमारे यहाँ। एकादशी, पौष एकादशी को भजन शुरू होगा 21 तारीख को, 21, 22, 23 के। अब मैं भजन में आया हूँ, निमंत्रण पाया हूँ। तब कितनी बार लिखा हुआ है राम आपके शरीर पे? उसको गिन नहीं सकते हैं, गिनते हैं उसको गिनेंगे कैसे? पूरे शरीर पड़ जाएगा कि इतने राम नाम लिखाए हूँ कह करके पड़ेगा ना। तो कैसे ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने कितना बार राम नाम कैसे लिखाया हूँ? पर पूरे शरीर में लिखवाया हुआ? पूरे शरीर में। आप जहाँ पर देखिए राम नाम के शरीर में है पूरा। तो 22 जनवरी को किस तरह से देखते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है? इतने सालों बाद जो भव्य मंदिर है वो बन के अब खड़ा। देखो, मैंने 1999-98 में जब कार सेवा हुआ ना, तब भी देखने आया था। यहाँ 5 दिन तक रहा और सफाई किया। उसमें 20 ईंटा पक आगे गया। वो शिलान्यास हुआ जब भगवान को बैठा ले मूर्ति को, तब जब मस्जिद टूटा तो उसके ध्वजा को मैंने पकड़ा था।
Following a tragic boat capsize in Vadodara that claimed the lives of at least 16 individuals, including 14 students, authorities have filed a case against 18 individuals in connection with the incident. One person died after a massive fire broke out in a container truck in Thane. The authorities have sent the mortal remains to the hospital for post-mortem. All Kamtapur Students' Union members blocked the railway line near Betkara railway station in Jalpaiguri, West Bengal. The Students' Union demanded for a separate state of Kamtapur. At the 54th meeting of World Economic Forum, Union Minister Smriti Irani lauded Prime Minister Narendra Modi's development mantra and said that in his 10 years of administration, PM Modi made women the center point of development. भारत की सबसे प्रमुख प्रतिभा भारत की महिला को नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के प्रशासन में विकास का केंद्र बिंदु बनाया। डावोस, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लगभग 5 दशकों से चल रहा है, यहां विश्व भर के सबसे बड़े व्यावसायिक समूह के प्रतिनिधि आते हैं। वर्तमान में इस डावोस में 300 से ज़्यादा भिन्न भिन्न राष्ट्रों के मंत्री आए हैं और जितने भी ग्लोबल पावर हाउसेस हैं वित्तीय दृष्टि से, वो डावोस में आकर नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं। Amid the freezing temperatures in our national capital, Indian forces prepare for the 75th Republic Day celebrations. The parade rehearsals are underway at Kartavya Path in New Delhi. With temperatures staying low, Delhi experiences a cold wave and dense fog enveloping the national capital. The dense fog situation has caused low visibility, due to which several flight operations are delayed and few others have even been cancelled. The White House is closely monitoring the escalating tensions between Pakistan and Iran. National Security Council spokesperson John Kirby said that the White House does not want to see an intensification of conflict in the region. UN Chief Antonio Guterres is concerned about the escalation between Iran and Pakistan and called for any issues between the two countries to be addressed through peaceful means, through dialogue and cooperation. Rockets between Iran and Pakistan. We've seen reports of casualties on both sides. Again, he urges both countries to. This is Republic Diva Bupa Studio, your one-stop for all the breaking news updates, and I am Nikita Sahai. Well, right now I am in Ram Mandir, Samagri Bhandara. This is the place where all the things, all the gifts that are coming in Ram Mandir are being kept, and this is the place where all the ghees, the water from different rivers of India, the purified scents and the gifts are being kept. The idols are also being kept. You can see water coming from Janakpur, from Nepal, from all the rivers of Nepal. This has been sent by the Nepal government along with the Indian Bhakts. They have collected water from all the rivers of Nepal, and this is here the murti of the Shiv Parvati is here. This has also been gifted. All this other things that are here, the idols, the vigrahas, this have been gifted. The Gada has been gifted from some states, and this is the entire stretch of this place is a storeroom of all the gifts that the people from all across the world have actually gifted. The Trishul has been gifted, and also I'm joined by
the vice president of ISKCON, the spokesperson of Kolkata ISKCON. Actually, a thought came that the residents of Ayodhya did great injustice to Mata Sita. So although Bhagwan Ram, he is coming back after 500 years Kali Yugi Banvas, but we should think about Mata Sita also, because Sita Mata was also exiled from Ayodhya, and it is almost 8,70,000 years. So we thought that this is very, very important occasion. Hello and welcome. You're watching the Weekend Debate with me, Shavans. And ladies and gentlemen, just about a few days from now, India will celebrate the Pran Prashishtha. Many would say that it's reclaiming the ancient civilization, a tradition that was completely forgotten for a very long time. But to have reached where we have today, there has been a long, arduous battle. Many have been associated with this struggle for a very long time, finally seeing the culmination of the Ram Mandir. On the Weekend Debate tonight, we'll not only touch upon this long journey, but also the message that is being sent across the globe. All this and much more on this edition of the Weekend Debate. Let's first also take a look at the headlines we're tracking at this hour. Restoring India's ancient Hindu culture. That's our Weekend Debate. And also tonight we get you an exclusive interview with Norwegian parliamentarian Himanshu Gulati. The message that Ram Mandir sends across the globe. From Ayodhya in devoutly festive mood as Ram Lalla idol is to be consecrated on Monday. With just 2 days to go for the consecration ceremony, Republic speaks to Dipendra Mishra, the officer architect of Ram Temple. Biggest Ayodhya interviews, Ram Bhadracharya speaks to Republic. AIMIM chief Owaisi Stokes controversy again says Mandir didn't exist when the VHP was formed. Prime Minister on a 2-day visit to Tamil Nadu offers prayers, holds roadshow in Rameshwaram. Judicial custody of Trinamool Congress leader Shankaradhyaya has now been extended. 14-day judicial custody has been granted. Ladies and gentlemen, the world will witness history being scripted with golden letters on the 22nd of January. This, as the nation will welcome Ram Mandir, and even as we speak, ladies and gentlemen, we're getting mesmerizing visuals of the Ram Temple being lit in the evening. In fact, there is a long history behind it. The sun is essentially setting on a 500-year-long wait, and while India is waking up to a new morning, the revival of the Hindu era, which will decidedly be marked by the Ram Mandir Pran Prashishtha in Ayodhya on 22nd of January. In line with this, many long-lost temples across the country are also coming back to life. Ladies and gentlemen, what we've also seen over the last few weeks is that there have been politics that has been played over Ram Mandir. As we've been saying that Ram belongs to all, but yet there is a few who believe there is polarized times that we are living in. But is that the message that Ram Mandir sends across? Is this the time to really politic on this entire matter, or perhaps the message of communal harmony should be sent across? You have several leaders
once again questioning the fact that whether at all this is a government-sponsored program. Despite facts being laid out on the table, many still believe that it is important to question an ancient civilization, an ancient tradition that was completely lost. Not to forget that this is not just about the Ram Mandir, but several temples that have been plundered in India. And it is time, many would say, to reclaim that lost civilization. Take a look at all the developments and then we begin the weekend debate. A renewed, distinct identity. This is what India is getting on the 22nd of January. The revival of a 7,000-year-old culture and history is a cornerstone of this renewed identity. At the heart of this is the newly built Ram Mandir. On the 22nd, an important part of India's ancient civilization and identity will be restored. Prime Minister Narendra Modi himself is deeply imbibed in it and is inspiring the nation to follow in his steps. All the vibrant colors across Ayodhya, chants of Jai Shri Ram right now. Sir, यहाँ पर Jai Shri Ram और यहाँ पर Jai Shri Ram और भी जो है उसमें शक्तिशाली होते जा रहे हैं. जय श्री राम के नारे और भी तेज होते जा रहे हैं जब से. जय जय श्री राम. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. 500 वर्षों बाद ये घड़ी आई है. मंदिर बनने में अब कुछ ही समय है. भगवान 22 तारीख को विराज जाएंगे. हम छतरपुर जिले से, मध्य प्रदेश से, बागेश्वर धाम के पास से आए हैं. मंदिर श्री राम लल्ला की बोलिए जय श्री राम. अरे अयोध्या तो एक झांकी है, बारी है अब मथुरा की. ऐ दुनिया वालों सुनो, हर वो कलंक मिटाएंगे. सौगंध राम की खाए थे, देखो मंदिर वही बनाए हैं. Ayodhya's Ram Mandir is not alone. Long lost temples across the country are getting a facelift, allowing the revival of an identity that was nearly lost in time. We are reporting from the Raghunath temple in Jammu, where you will see that the Sundarkand part has begun as a part of the 3-day celebrations for the upcoming Pran Prashishtha Samaroh of Bhagwan Ram. And I am joined by a few of the disciples who are here. Madam, कितनी खुशी है भगवान राम का मंदिर बनने में? हद से ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये एशिया का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है. हम यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए सारे आए हैं. Hinduism is clearly intertwined with India's ancient culture, and the momentum to rebirth a mighty nation that honors and channels its historical advancements is strong. So, does the Ram Mandir Pran Prashishtha mark the birth of a revitalized new identity for India that is shedding its colonial past? Let's debate. Joining us on this special weekend debate, we have Dr. Ram Vilas Vedanti, working president of Shri Ram Janmabhoomi Nyas Samiti. Ram Pateshwar Das Ji Maharaj, chief Mahanta of Ram Janki Mandir, Janakpur Dham, Nepal, is joining us on this broadcast. Along with him, Ram Roshan Das Ji Maharaj is the successor of Mahant Ram Janki Mandir, Janakpur Dham. You also have Nina Rai, author of Amazing Ayodhya, joining us on this broadcast, and Dr. Dharmasya, president of the International Divine Love Society, joining us on this broadcast. Dr. Ram Vilas Vedanti जी, सबसे पहले नमस्कार. आपसे शुरू करना चाहूँगा क्योंकि ये कहा जाता है कि राम मंदिर को लेकर अयोध्या की जो मुहिम थी उसके पीछे कई लोगों का हाथ था. कई लोग कोशिश यही कर रहे थे कि एक दिन राम मंदिर बने. डॉक्टर राम विलास वेदांती, सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने कभी ये सोचा था कि आज का दिन भी आएगा? जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब हमको विश्वास हो गया था कि अब भगवान राम लला का मंदिर जरूर बनेगा.
2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री की शपथ लिए, उसके पहले नारा लगाया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जब 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हो गया, 3 तलाक समाप्त हुआ, तब मुझे पता चल गया था कि राम जन्मभूमि का निर्णय भी आएगा। और 9 नवंबर 2019 को हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दिया, जहां राम लला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। भारत सरकार एक नया ट्रस्ट बनाकर उसके द्वारा मंदिर का निर्माण करे। और मोदी जी ने पार्लियामेंट में विधेयक ला करके 2020 में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया और इसके बाद मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। आज मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो गया और 22 जनवरी को मोदी जी के द्वारा भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको संपूर्ण विश्व देखेगा। ऐसी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था कि इतना जल्दी निर्णय आएगा, इतना जल्दी मंदिर बनेगा और इतना जल्दी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्योंकि हम लोग 1528 से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1528 में जब बाबर ने मीरबाकी के द्वारा मंदिर को तोड़वाया था और इसके बाद सन 49 में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने 22/23 दिसंबर की रात्रि को भगवान राम लला को प्रकट किया था, जिस राम लला का प्राकट्योत्सव अभी 14 जनवरी को हम लोगों ने अयोध्या में मनाया। और इसके बाद जो दृश्य प्रस्तुत हुआ, उस दृश्य को देखने के बाद लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और 30 दिसंबर 2023 को मोदी जी जब अयोध्या रोड शो में आए और अयोध्या के स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखा और अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा, तब हमको पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है अयोध्या का, उस वर्णन के अनुसार मोदी जी ने अयोध्या के विकास के लिए 25,000 करोड़ का पैकेज दिया। और अयोध्या में जिन मार्गों का निर्माण हो रहा है, राम पथ, भक्ति पथ, ज्ञान पथ, वैराग्य पथ, ये सारे जिन पथों का निर्माण हो रहा है, उन पथों के द्वारा धर्म पथ, इनके द्वारा जो भव्य मंदिर के निर्माण की व्यवस्था सुचारू रूप से अयोध्या की हो रही है, ऐसी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था। उस कल्पना को मोदी जी ने साकार कर दिया कि त्रेता युग की अयोध्या को कलयुग में उन्होंने उतार दिया है और त्रेता की अयोध्या अब कलयुग में आ गई है। इसलिए ऐसा सौभाग्य हम सब लोगों को 22 जनवरी को 12:15 के बाद मिलेगा। भगवान राम के लिए हम सब लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। मैं तो 25 बार जेल गया। भगवान राम के संघर्ष के लिए हजारों लोग घायल हुए। और कोठारी बंधुओं का स्मरण होता है, जब कोठारी बंधु को मुलायम सिंह यादव ने पुलिस की वर्दी में आतंकवादियों को, मुसलमानों को लगा दिया था। वो दिगंबर अखाड़ा और हनुमानगढ़ी के बीच, हनुमानगढ़ी के चौराहा में, जब मुलायम सिंह यादव के आतंकवादी मुस्लिम पुलिसकर्मियों ने भगवान के भक्तों पर गोली चलाया था, उस दिन का स्मरण हो रहा है। कोठारी बंधु का बड़ा भाई, उसकी छाती पर गोली लगती है और वो जमीन पर नीचे हनुमानगढ़ी चौराहे पर गिर पड़ता है। तो छोटा भाई बड़े भाई की लाश को उठाने के लिए जब आगे बढ़ता है तो छोटे भाई की छाती पर भी आतंकवादियों की गोली लगती है और छोटा भाई की लाश बड़े भाई की लाश पर गिर जाती है। ये जो दृश्य है, ये अयोध्या के लोगों को याद है। अयोध्या के लोगों पर किस प्रकार मुलायम सिंह यादव ने अत्याचार किया था, पापाचार किया था, ये अयोध्या का इतिहास बताता है। लेकिन आज सौभाग्य से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा सौभाग्य हम सब लोगों को मिल रहा है। इसलिए देश की जनता ने, संपूर्ण विश्व का जनमानस, न केवल हिंदू, अपितु इस देश का मुसलमान भी प्रसन्न है, ईसाई भी प्रसन्न है, सिख भी प्रसन्न है, यहूदी भी प्रसन्न है, बौद्ध भी प्रसन्न है, जैन भी प्रसन्न है। अब विश्व के कई देश के राजनीतिक लोग भी अयोध्या में भगवान राम लला का दर्शन करने के लिए 22 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि साक्षात त्रेता ही कलयुग में उतर करके अयोध्या में आ गया है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या के विकास के लिए जो 85,000 करोड़ रुपये दिया है, उसके द्वारा अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। इस अयोध्या के कायाकल्प को हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसा मंगलमय दिव्य सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए यह जो दृश्य हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है, केवल नरेंद्र मोदी के इच्छा शक्ति के अनुसार ही
अयोध्या का यह मंगलमय दिव्य दृश्य प्रस्तुत हुआ हम सब लोगों के सामने। इसलिए आज हम सब लोग न केवल अयोध्या वासी, संपूर्ण विश्व का जनमानस मोदी जी को धन्यवाद देता है और भगवान राम लला से मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आजीवन मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें और अयोध्या के विकास के लिए इस प्रकार का पैकेज हम सब लोगों को मिलता रहे, जिससे अयोध्या वासी लोग यहाँ आकर के अपने मंगल में दिव्य प्रभु राम का दर्शन कर सकें। दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर बना है अयोध्या का। ऐसा मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया था और राजा विक्रमादित्य के बाद जब मंदिर टूटा तब अब जब मोदी जी इस मंदिर को बनवा रहे हैं, इस मंदिर की कल्पना किसी ने नहीं किया था। ऐसा दिव्य भव्य अलौकिक दृश्य राम जन्मभूमि को जो दिया गया है, वह अलौकिक दृश्य त्रेता का दिखाई देता है। त्रेता में कलयुग उतरकर मोदी जी की कृपा से भव्य रामलला के मंगल में दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दर्शन का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त होगा। जी, रामपतेश्वर दास जी महाराज, आपसे जो जानना चाहूंगा कि जब ये कहा जाता कि राम सबके हैं, साथ ही साथ ये देखने को आता कि सिर्फ भारत के लिए नहीं, कई दूसरे देशों के लिए, नेपाल से लेकर इंडोनेशिया से लेकर श्रीलंका तक हर जगह पे राम को लेकर जो चर्चा हो रही है, जो चर्चा कई सालों से नहीं हो रहा था, क्या आपको लगता है ये सही समय है जो राम के लक्ष्य पर चलने वाले हैं, उससे देश और दुनिया को बहुत लाभ पहुंचने वाला? ये तो निश्चित है कि हमारे हिंदू नहीं बल्कि जीव मात्र के मानव के लिए ही उन्होंने अवतार लिए थे। और ख़ास करके हम नेपाल और मिथिला वासी तो राम जी को भगवान नहीं मानते, हम लोग तो अपना एक दामाद के रूप में उनको मानते हैं, क्योंकि हमारी किशोरी जी के साथ उनकी शादी हुई। तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारे दुल्हा सरकार हमारे दामाद के घर बना है और उसमें ये नया घर में वो जाएंगे, अभी घरवास लेंगे, तो इससे खुशी बहुत है। और उनकी चरित्र और चित्रण जो है सो तो संसार में व्याप्त है। मानव जीवन का जीने का सही रास्ता ही उन्होंने बतलाए। स्त्री जाति की क्या चरित्र होना चाहिए वो सब हमारी किशोरी जी सीता जी बतलाई है। तो उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को, उनकी क्षमाशीलता को, उनकी धैर्यता को यदि आज के युग में लोगों यदि धारण करे तो मेरे ख्याल से किसी मनुष्य को कष्ट नहीं पहुंचेगा। उनका धैर्यता, उनका चरित्र, उनका जो एक क्षमाशीलता था, उनके प्रजा के प्रति जो वात्सलता था, वो सब को यदि मनुष्य धारण कर ले तो किसी भी जीव को ये नहीं होगा कि मैं कष्ट में हूँ या नहीं कोई अहम होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी गए थे जनकपुर और सीता जी जानकी मंदिर में दर्शन करने, तो हमने पूछे कि आप कहाँ आए हो, तो उन्होंने बताया कि हम ननिहाल आए हैं। अब ये कितना बड़ा करुणामय बात हुआ, बताइए। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री और अपने को कह रहे हैं भाव में आके कि हम भाव विभोर होके बता रहे हैं कि हम अपने ननिहाल आए हैं। ये कितना वात्सलता और कृतना करुणामय वाणी है उनका। ये निश्चित है कि जीव को उनके चरित्र पर, उनके सारी जिंदगी का इतिहास पर यदि चले तो सब आनंद ही आनंद में रहेगा। विश्व के स्त्री यदि हमारी सीता जी को चरित्र को चित्रण करे और अध्ययन करे तो पूरा विश्व के स्त्री को जीने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। हम लोग तो अभी भी अयोध्या और मिथिला को ये समझते हैं कि हमारे समधियाना है, और उसी रूप से अभी भी त्रेता युग की तरह हम लोग अयोध्या से बारात मंगा के और वहाँ हर साल जो है विवाह महोत्सव मनाते हैं। तो मालूम पड़ता है कि आज ही त्रेता है, आज ही विवाह हो रहा है। इसीलिए हम लोग जो है सो धन्य है। आज की जो ये पुण्य तिथि जो 22 को आने वाला है,
तो हम सारे मिथिलावासी धन्य और प्रसन्न में है कि हमारे दामाद को घर नहीं था, अब घर हो गया और हमारे नए घर में जाएंगे हमारे बेटी और दामाद। इससे बहुत प्रसन्न है हम लोग। जी, ये सवाल मैं राम रोशन दास जी महाराज से करना चाहूँगा, क्योंकि आप इस वक्त अयोध्या में हैं और डॉक्टर रामविलास वेदांती भी ये कह रहे थे कि जिस तरह से अयोध्या बदल रहा है, क्या आपने ये कल्पना की थी कि ऐसा भी हो सकता है अयोध्या में आज के टाइम में? जिस तरह से एक तरह से हम जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आपने इसकी कल्पना की थी? हम लोग तो नेपाल वासी हैं, बहुत कुछ हमारे गुरुदेव आपको अभी बताए हैं। कल्पना तो जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत में हुए और उनकी कार्यकाल तो पहले भी हम लोग समाचार के माध्यम से, गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे उस समय से उनका एक छवि महापुरुष की तरह हम लोग देखते थे। तो जब एक भारत की प्रधानमंत्री बन के आए तभी से हम लोग थोड़ा सा ऐसा हुआ जो अब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो ये वहाँ पर जो तंबू थी और बन नहीं रही थी, तो इसका तो बहुत संत महापुरुष का भी बहुत बड़ा शहादत है और सबका परम इच्छा था, केवल भारत का ही नहीं, विश्व की सनातन की परम इच्छा थी कि कब मंदिर बनेगी। तो उस मंदिर का अभी जो वर्तमान में जो हम लोग देख रहा हूँ, जो अब उस मंदिर में भगवान राम लला जी पधार गए हैं और हमारे वैसे भी नेपाल वासियों का बेटी रोटी का संबंध त्रेता युग से रहा। हम लोग उस संबंध को अभी भी देशवासी उसी तरह से हम लोग नेपाल भारत एक मित्र राष्ट्र नहीं, मैं हम लोग संबंध राष्ट्र की तरह जीता हूँ। तो संबंध राष्ट्र में अब हमारे किशोरी जी दीदी सीता जी और दूल्हा बना है राम जनकपुर में, तो हम लोग का बहनोई है और उस मंदिर में अब जाएंगे जब तंबू से, तो हम लोग तो बहुत प्रसन्न हैं और हम लोग कृतार्थ भी हूँ जो अभी के कार्यकाल की सरकार जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर अभी विश्व पटल को एक संदेश दिए और एक दर्शन दिए जो अनहोनी को होनी किए हैं। पहले तो हम लोग समाचार से सुनते थे कब होगी, क्योंकि आज की इतिहास की नहीं थी, इतिहास ही हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग तो इस शताब्दी का हूँ कि 500 बरस का झगड़ा है, लेकिन ये झगड़ा बहुत कम समय में और बहुत बढ़िया से सुलझा करके, हमें नहीं लगता है जो विश्व की कोई भी धर्मावलंबी हमारे सनातन के बाहेक भी, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, अन्य भी हो, सबका देखता हूँ अभी ये राम जी का उस मंदिर में जाना सबकी हृदय में अब लालसा जगा है और सब में देखता हूँ राम में वातावरण, और हम लोग बहुत हर्ष और उल्लासित हूँ। बहुत बड़ा एक अभी निमंत्रण में आए हैं तो एक पुलकित भी हूँ जो कब उस क्षण को दर्शन करूँगा। महाराज, मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस बातचीत को आगे लेकर जाना कोशिश करेंगे। Nina Rai, I want to also bring you in. You've written extensively about Ayodhya in your book, and many would say that not enough is known about Ayodhya. While there are folklores about Ayodhya, the stories that we've actually heard, what, in your opinion, when you were essentially doing your research on Ayodhya, what is it that you found astounding? And what is it that you would like to tell the people who are watching us tonight about the celebrations that are taking place in Ayodhya, but there is something that is not known to the world?
Well, one of the things that I would like to begin with about Ayodhya is that Ayodhya, Hindus consider Ayodhya not only as the birthplace of Ram Bhagwan, Hindus also consider Ayodhya as the cradle of human civilization. The reason I speak about the cradle of human civilization is because after the Manvantar, after the Pralay, every time there is a Pralay and the Manvantar starts, Manu comes and rebirths the human species, and he made Ayodhya his capital. So हिंदी में अगर बोलें तो अयोध्या जो थी, अयोध्यापुरी जो थी, वो आदिपुरी है. मनु जी ने इस पुरी को बसाया है. ये ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं. मनु के जो बच्चे हैं, जो प्रोजनी होती है मनु की, उसे हम मानव कहते हैं. हम अपने आप को जो मानव कहते हैं, हमारी जो the progenitor of the human species is Manu, and it is Manu who established Ayodhya. So Ayodhya is as old as the human race. This is one of the first things that shocked me when I was doing my research. ये साधु संत महात्मा भी इसी बात को बोलेंगे कि मनु से मानव आए हैं, and the English word man is actually derived from the word Manu. दूसरी बात, लगातार बसी है अयोध्या, और सत्य युग से त्रेता युग तक अयोध्या जो थी वो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में के साथ थी. उसके बाद अयोध्या लुप्त होती है कुछ टाइम के लिए, फिर वापस आती है, फिर 500 साल बाद फिर हम उसे वापस लेके आए हैं. राम लला को हम वापस लेके आए हैं अयोध्या में. अयोध्या जो थी पूरे वास्तु के हिसाब से बनी हुई थी. So if you take a look at Ayodhya, it was made according to Vastu, and it had a very military design of construction. It had a military layout, and Ayodhya was a prototype. The city of Ayodhya was a prototype of which we find copies across the world. We have beautiful descriptions in the Valmiki Ramayana about Ayodhya and the houses of Ayodhya. And one of the most important things that is written in Valmiki Ramayana is Ayodhya Nam Nagri Tatra Asit Lok Vishruta Manuna Manav Indren Ya Puri Nirmata Swayam, which translates to Ayodhya was one of the most famous city in the world even then. It is considered a Saptapuri, a Moksha-dayak city, a Moksha-dayak district. And so Ayodhya has been famous since the dawn of mankind, since the dawn of time as we know in this Manvantar, and it has continued to be famous till now. It was a prototype. Many copy cities we find across in the world. In fact, in the ancient times, during the time of my research, I found that the layout of Ayodhya, I found it in Angkor Wat, I found it in the imperial city in China. I found same ideas, the same concepts in Peru, in Latin America, and there are many other ancient civilizations that I found were copying the same sort of design. One of the things in Vastu Shastra we consider very important is true north. True north is different than the magnetic north. Even the pyramids face true north. A lot of Western archaeologists, Westerners have not been able to decode why the pyramids face true north. And if we take a look at the Hindu, knowledge system, we understand the importance of true north. So Ayodhya was facing north. Even for that matter, the oldest excavated site in India, which is Dholavira also is facing towards true north. The layout is true north. So these were certain very shocking discoveries I made during my research. And I'm very glad that the temple is finally being built today. Right. This temple is not only a temple. It is not only the battle for a temple. This temple is a revival of Hindu sentiments. It's a mark of Hindu resilience. People do not know how many Hindus, अगणनीय हिंदुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि राम मंदिर वापस आए. अगणनीय हिंदू लेखकों ने, कवियों ने अपने प्राणों को, अपने जीवन को दिए की बाती समान जला दिया ताकि हर इंसान, हर हिंदू के मन, मस्तिष्क और हृदय में राम जी की महिमा और राम मंदिर और अयोध्या सदैव देदीप्यमान रहे. So this is
not only a temple, but I would say that this is a generational battle that we have won. We have won against genocidal monsters who tried to remove our existence from the world map as well. Well, also, I guess it is time to look ahead. And I would like to bring in Dr. Dharmasya on this point. Dr. Dharmasya, what I also find extremely fascinating is the fact that this is not only about a celebration of Hinduism, this is not the only celebration of perhaps reclaiming the lost tradition, but also an opportunity of bringing the world together. You are in Malta, and I see that several other countries today who are participating in the Pran Prashishtha all coming together and saying that, look here, at a time when the globe is seeing this kind of turmoil, we are talking about the message of unity, the message of global peace, and there is a lot more to learn that in a dispute of this nature, we've been able to amicably solve it. Yes, you are right. This celebration is not the celebration for the Hindus. It's a celebration for the world, for all of us. This is a celebration, and also this celebration is not ordinary celebration. In my opinion, this is not ordinary celebration, and also not a religious celebration, but it's divine celebration. It's a nectar, because Ramayana itself came to this world bringing the all kind of goodness. And for the world, in our ancient scripture, written in palm leaf, जो ताल पत्र में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथ है, खवी भाषा में, हमारी पुरानी भाषा में है, वही कहते हैं कि रामायण सभी के लिए है, और रामायण का उद्देश्य है इनाकनी कांग भुवन काबे, that is in our ancient language, खवी भाषा में है. इसका मतलब है कि रामायण का उद्देश्य है कि लोगों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए है. और ये जो celebration is divine celebration. This is divine celebration, the celebration for all. And we need to be together, because Ramayana सिखाते हैं कि कैसे साथ साथ रहना, कैसे अलग अलग रहना वो नहीं सिखाते, कैसे साथ रहना, अलग अलग मत में लेकिन साथ रहना, ये है रामायण सिखाते हैं. अभी जितना भी मतभेद है, चाहे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, चाहे धार्मिक differences or spiritual differences, we should kick it away, keep away from Ramayana, from this celebration. Let's be together to celebrate this. ये नेक्टार का है, जैसे समुद्र मंथन रहता है, उसमें केवल नेक्टार ही नेक्टार, अमृत है अमृत, तो अमृत को पीजिए, अमृत को पीजिए, इसमें कुछ गंदगियां मत डालना. ये बहुत साल बाद मिला है, ये चांस है, अवसर है, और this is the beginning of the goodness of the world. This is also the beginning of the glory of the India, Bharata, the beginning of the glory of the world. Let we celebrate. और ये जो रामायण है, ये संसार में है, केवल भारत में नहीं है. अयोध्या भी हमारे यहाँ इंडोनेशिया में अयोध्या है, और थाईलैंड में भी अयोध्या है, और हमारे एक बहुत बड़ा मंदिर है जावा में, प्राम्बानन मंदिर कहते हैं, वहाँ चारों दीवार में अंकित है रामायण, वो रामायण हमारे हैं. रामायण सभी का है, और ये जो सेलिब्रेशन है, try not to disturb this celebration through political or other differences. So let's be together. Sangachadhvam, sangvadadhvam, sangvo manangsi janatam. Let's be together to celebrate this.
I think so. That's a very strong message that many are now sending across. Dr. Ram Vilas Vedanti साहब, आपसे ये एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि पुराने जो जख्म है उसे भुलाकर आगे की अगर सोचे ताकि सबको साथ में लेकर चले, क्योंकि आज जिस तरह से राजनीति इस पूरे मामले को लेकर होता रहा, ओवैसी साहब ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को आप भूल जा रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जिस तरह से एक कम्युनिटी की मार्जिनलाइजेशन की बात होती है, क्या आपको लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए? देखिए, ओवैसी की बात तो पूरी तरह से गलत है। वहाँ पर मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था। सन 2005 में हमने हाई कोर्ट में जो गवाही दिया था, हाई कोर्ट में गवाही देते समय माननीय जज ने हमसे पूछा था कि क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो मैंने प्रमाण वाल्मीकि रामायण का दिया था और ये पूछा था कि कब से राम लला वहाँ विराजमान है। वाल्मीकि रामायण में लिखा, कोसलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान निविष्टा सरजू तेरे प्रभुत धन धान्यवान अयोध्या नाम नगरी तत्रा से लोक विश्वता मनुना मानवेंद्र ने या पुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्वैच योजनानि महापुरी श्रीमती तीर्ण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वाल्मीकि रामायण की इन श्लोकों की व्याख्या पूज्य करपात्री जी महाराज स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी ने रामायण मीमांसा में लिखा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की गणना किया है। गणना के अनुसार 1,81,60,65 वर्ष पहले राम लला का जन्म हुआ था। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफर याब जिलानी ने जो राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़ने का विवरण दिया है, उसमें 1528 लगभग 895 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का निर्माण कराया था। राजा विक्रमादित्य को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया था, महाकाल ने, कि जाकर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाओ। और राजा विक्रमादित्य अयोध्या नहीं जानते थे। एक नदी के किनारे बैठे थे, तब तक एक काला पुरुष काले घोड़े में बैठकर आता है और एक नदी में छलांग लगाता है तो श्वेत वर्ण का हो जाता है, उज्ज्वल वर्ण का हो जाता है। और जब बाहर निकला तो राजा विक्रमादित्य दौड़ पड़े और पूछा, आपका परिचय? तो उसने बताया कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, प्रतिवर्ष मैं अयोध्या में सरजू स्नान करने के लिए रामनवमी के दिन आता हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा था कि राम का जन्म कहाँ हुआ है। तो तीर्थराज प्रयाग ने बताया कि मेरे जाने के बाद एक गौ माता प्रकट होगी और गाय जहाँ पर खड़ी होकर के उसके चारों थनों से दूध की धारा बहने लगे तो समझ जाना यही राम की जन्मभूमि है। और उनके जाने के बाद गाय माता प्रकट हुई और राम जन्मभूमि पर जहाँ रामलला का जन्म हुआ था खड़ी होकर उसके चारों थनों से दूध की धारा बही। तब राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर विश्व का सबसे ऊंचा दिव्य भव्य मंदिर बनाया था। ये इतिहास बताता है। और बाबर जब पहली बार 1528 में लखनऊ आया और लखनऊ से पूरब दिशा की ओर देखा तो उसको 2 चंद्रमा दिखाई दिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में। तो उसने अपने सिपह सालार मीर बाकी से पूछा कि ये मैंने दिल्ली कलकत्ता सब जगह एक चंद्रमा देखा, लेकिन यहाँ 2 चंद्रमा कहाँ से आ गए? तब उस समय मीर बाकी ने कहा, ये चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन दूसरा चंद्रमा राम जन्मभूमि के शिखर पर लगा हुआ चंद्रकांता मणि है। तब बाबर ने कहा कि चंद्रकांता मणि को जाकर मंदिर तोड़कर ले आओ और 10,000 सेनाओं से आक्रमण किया। लेकिन हमारे अयोध्या के लोगों ने सेना को भगा दिया। 76 बार की लड़ाई के बाद 5 लाख हिंदू मारे गए। इसके बाद उसने मंदिर को तोड़ करके उसमें 3 गुम्बद खड़ा किया, लेकिन मीनार नहीं बना पाया। कुरान में लिखा हुआ है कि जिस मस्जिद में मीनार नहीं होती उसको मस्जिद नहीं माना जाता। और 14 कसौटी के खंभे थे जिसमें हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, नरसिंह भगवान की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, भगवान राम के धनुष बाण के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। वहां मस्जिद का कोई चिन्ह था ही नहीं। मैंने हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा दिखाया और नक्शा दिखाकर जज साहब से पूछा तो जज साहब ने कहा ये तो मंदिर के चिन्ह है। और हमने जफर याब जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील से पूछा था कि दुनिया के किसी भी मस्जिद में यदि इन देवी देवताओं का चिन्ह दिखा दो तो मैं राम जन्मभूमि न्यास का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते कह दूंगा कि ये मंदिर नहीं है। और जफर याब जिलानी ने मुझसे 5 दिन का समय मांगा और लौट कर जब आया
तो जज साहब ने पूछा वेदांती जी के प्रश्नों का उत्तर क्या है, तो जफर याब जिलानी ने कहा दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं हैं। आज तक राम जन्मभूमि पर किसी मुसलमान ने अजान नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ा। इसलिए साबित हो गया है कि जहां रामलला विराजमान हैं वहां पर कभी भी किसी मुसलमान ने अजान नहीं किया, कुरान नहीं पढ़ा। वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। इसलिए शास्त्र की परंपरा के अनुसार, वेद की परंपरा के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, सब जगह अयोध्या में रामलला का वर्णन है, लेकिन बाबर का नाम कहीं नहीं है। अयोध्या के किसी गली में, मोहल्ले में, घाट में बाबर नाम का कोई चीज अयोध्या में है ही नहीं। यहाँ राम घाट है, कौशल्या घाट है, दशरथ घाट है, कैकई घाट है, सुमित्रा घाट है, राज घाट है, या रामकोट है। बाबर के नाम पर कोई मोहल्ला भी नहीं है, इसलिए बाबर के नाम पर मस्जिद होने का कोई सवाल ही नहीं है। और मैं सन 2005 में 5000 पृष्ठ की गवाही दिया था। उस गवाही के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने निर्णय दिया है कि जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। इसलिए ओवैसी की बात गलत है। काशी के विश्वनाथ मंदिर में जब सर्वे हुआ तो सर्वे में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी शब्द हिंदू परक है, संस्कृत परक है, वैदिक परक है। ज्ञानवापी शब्द, ज्ञान शब्द और वापी शब्द कुरान में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी मंदिर ही है। वैसे ही मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में सीढ़ियों का देवी देवताओं की मूर्तियों को उल्टी लगाकर सीढ़ी बना दिया गया। ये मुगल काल में कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाया और कांग्रेस ने जानबूझ करके हिंदू मंदिरों को तोड़ने का समर्थन किया। जवाहरलाल नेहरू आज तक, जब तक जिंदा थे अयोध्या नहीं आए। इंदिरा गांधी जब तक जिंदा थी रामलला का दर्शन करने नहीं गई। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री दर्शन करने नहीं गया और कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री दर्शन नहीं करने गया। 60 वर्षों के शासन काल में कांग्रेस ने कभी राम जन्मभूमि की ओर देखा ही नहीं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, आखिर राम ने इन कांग्रेसियों को क्या बिगाड़ा था? इसलिए पूज्य करपात्री जी महाराज ने कहा था कि एक दिन आएगा कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। अब वो 2024 आ रहा है, 2024 में कांग्रेस सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मोदी जी ने कहा था 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, और कांग्रेस मुक्त भारत 2024 में बन जाएगा। इन कांग्रेसियों ने राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, विश्वनाथ के नाम पर, शिव के नाम पर इस देश के लोगों को केवल ठगा है। देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम दंगा कराया है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस देश में कोई दंगा नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए आशा यही करेंगे किया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। वेदांती जी, आज आशा यही करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस पर सियासत ना हो, और जो ये कहा जाता है कि राम सबके हैं, इसी के आधार पर आगे बढ़े। And the message of global unity is perhaps the biggest message to be taken forward to. Thank you very much, Dr. Ramvilas Vedanti, Ram Pratishwar Das Ji Maharaj, Ram Roshan Das Ji Maharaj, Nina Rai, as well as Dr. Dharmasya for joining us on the weekend debate. On the other side, coming up is a special interview with a Norwegian parliamentarian who's been invited for the Pran Prashishtha. What message are we really sending across the globe? Listen in to what the parliamentarian had to say. $15,000 placements in 2022-23. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. Moitra got no relief from the Delhi High Court as she approached Delhi High Court to allow her to stay in her official residence, which is 9B Telegraph Lane. But today, Moitra, the expelled member of Parliament of TMC, who she was expelled from the Parliament on 8th of December 2023, and today her official residence, government residence, have been completely evicted, and clearly could be seen the visuals as the police officials are right now here outside the residence of Moitra. In fact, the officials from the
Directorate of States are also outside the residence of Mahua Moitra. The key of her residence have been officially handed over to the officials of Directorate of States earlier. Also, the first time when Mahua Moitra approached Delhi High Court clearly stated Mahua Moitra that she should request Directorate of States to allow her to stay in her official residence 9B Telegraph Lane. These are the visuals outside her residence. We could clearly see that some of the laborers are also standing outside her residence as they were called early in the morning to shift all the stuff from Mahua Moitra's residence to some other location. Right now, the entire house has been completely vacated by Mahua Moitra. The keys has been handed over, but we also could see the official vehicle of Mahua Moitra still standing outside her residence 9B Telegraph Lane. But this residence now no more belongs to Mahua Moitra. Morning at around 9 a.m. the shifting process started in the house of Mahua Moitra. She started shifting her stuff from her official residence 9B Telegraph Lane. Now this house is completely vacated and evicted by Mahua Moitra. She was expelled for her because there were serious allegations of the cash for Curie and also that she exchanged money in exchange for questions to the Shanhira Nandani Business Conglomerate Ethics Committee found the unruly behavior of Mahua Moitra and therefore she was suspended and expelled from Parliament. Following a tragic boat capsize in Vadodara that claimed the lives of at least 16 individuals, including 14 students, authorities have filed a case against 18 individuals in connection with the incident. One person died after a massive fire broke out in a container truck in Thane. The authorities have sent the mortal remains to the hospital for post-mortem. The Pran Prashishtha on 22nd of January is not only a celebration for all Indians, but many would say it's also an opportunity for sending out a message of global harmony. Over 50 dignitaries would be present in Ayodhya on 22nd of January. Joining us on this special broadcast is Norwegian parliamentarian of Indian origin, Mr. Himanshu Gulati, who has also received that invite. He would be present in Ayodhya on 22nd of January. Mr. Gulati, thank you very much for speaking to Republic TV. Let me begin by asking you, you've received that invitation, an invitation that many would say that they've been longing for. I would like to begin by asking you that, is this also a message that is being sent across the globe, that this is not only about the revival of an ancient civilization, but also an opportunity to send across a message that through dialogue and through democracy, you can actually solve various issues, various disputes? Certainly, and thank you for having me on. And let me start by saying that I feel deeply privileged to be invited to this historic event. And this is an event which I'm very happy that dignitaries from abroad have also been invited to, because it is indeed a message of harmony and peace, because we live in a world full of tension, conflict, violence, and the Ram Mandir and Ayodhya solution shows that through democratic means, through peaceful means, one can even solve long disputes. Mr. Gulati, I would like to stress upon a narrative that was largely built by the Western media about this is about Hinduism. It's only about Hinduism, and one particular community has always been sidelined. But the fact of the matter is that, as many would say, Lord Ram sabke hain. Do you believe that it is time that we send across the message that it is about communal harmony, it is about coexistence and spreading the message of peace? I hope that that's the message that comes out of this very historic and significant event. And if you look at what both Indian and Hindu culture and spiritualism is known for in the West, it is about harmony, inner harmony, meditation, finding your inner self. And I think that's what Hinduism stands for as well. I'm a proud Hindu, although I live in a Western country and sit in a European parliament.
the values we are taught by our parents, the Hindu and Sanskrit culture is indeed a culture of harmony and peace and coexistence. Let me also now perhaps focus a little bit about, Mr. Gulati, your visit to India, as I understand that you would be reaching Ayodhya on the 22nd of January, along with several other dignitaries. What is it that you would like to tell people from across various other countries who would also be present there, your counterparts from various other European nations? What is it that you would like to tell them? What is it that brings all of you together? So I represent the people of Norway, and Norway is also known for being the country where the Nobel Peace Prize is handed out every year. And it's the message of peace and harmony that I have come to both witness myself and spread to others across the world, because this could have been a day filled with dispute and tension. Instead, it's such a historic day that a long-standing dispute has been solved in the most democratic and peaceful way. And it is indeed a cultural celebration for people of all faith from around the world, regardless of if you are a part of the Hindu faith or not, that both this issue has been solved and that we are now opening a new Mandir for the whole world to come and see and experience. Would you then, Mr. Gulati, say that perhaps several other issues that today the world, the globe is facing could actually be resolved in a much more amicable manner, because given the fact that the beginning of 2024 has seen a lot of turmoil, Middle East particularly is in complete turmoil. Is there a lesson to be learned? There is a lesson to be learned. And if we look at the Middle East, what's happening between Israel and the Palestinians, or even between Russia and Ukraine, we definitely need a message of peace and a resolvement of these unnecessary violent conflicts. As human beings, we must come together regardless of our faith and celebrate what brings us together. And I think that this historic day should be used for that purpose. Since you are also a Western policy maker, I think so you would be in the best position to answer this question. While you come from the Hindu faith, did you at any point in time in your career actually face some sort of a resistance, keeping in mind that not many would have really understood the faith in itself? And today, many in India are also saying that it is time to reclaim what we have lost in the past. You know, what is unknown to people is often something they fear or have various notions about. But I think the fact that more and more traditions from the Hindu culture, such as meditation, spiritualism, is being known to the world, and the fact that also leading personalities in the world are from the Indian culture and the Hindu faith, be it now the Prime Minister in Great Britain or even leading politicians and CEOs of some of the biggest companies in the US, shows people that, I think the values and the teachings of the Hindu faith are very much aligned with the democratic values in the West, and that, no matter where you're from, if you work hard, stand for the right values, you can serve people all over the world in a very good way. How exactly is this now being viewed by the Western world? Because as I started this interview by asking you that there has been a narrative, and we ought to admit the narrative was about two different communities and one being marginalized. But with the Supreme Court of India making it very clear for both sides, and both sides have perhaps seen justice, how exactly is the Western world really looking at it? Well, I think what the world is seeing is that this is indeed a big cultural celebration. I think they see a united nation in India, primarily celebrating this historic event. And from what I've seen in the media, there's been very little tension being reported or disputes being reported. It seems like truly a day of coming together where the whole nation of India is celebrating. Mr. Gulati, you would be coming to India. You've had meetings with the Prime Minister in the past. Anything on the cards? What is it that you are bringing along with you from Norway? Of course, a country known for the Nobel Prize. What is it that you are going to represent once you are here in India? I'm bringing two gifts along with me. One of them is a Norwegian-designed yoga mat as sort of a thank you for the spiritualism and meditation that the
ancient Indian culture has given the rest of the world. The second is a statue of the polar bear, one of the more remarkable animals that I also think that Norway and the northern cold part of the world is known for. Mr. Gulati, earlier in the day I spoke to a spiritual guru, and the question that I asked him was the relevance of Lord Rama's teaching. As a policy maker, what is it that you perhaps infer or take from the teachings of Lord Ram, perhaps which is going to be extremely relevant in today's times? There's so much wisdom in old scriptures, in all the stories that reflect many of the situations and challenges that we meet in the current world. So I think it's very important that people read and learn about the culture, learn about old scriptures, because it's often the same dilemmas that go again and again in all of humanity. So I certainly want to use this opportunity to revive my own spiritualism and learn more about the Indian and Hindu culture. One final question that I would like to take from you, Mr. Gulati. Is there anything specific in your mind when you're here in India that you would like to achieve? Because you're undoubtedly one of those lucky few people who would be able to witness the Pran Prashishtha. I want India to know that India is not alone in this celebration. The whole world is with you, and the whole world is looking at India right now on this historic day. Well, thank you very much, Mr. Gulati, for joining us on this special broadcast. Hope you have a good time when you are here in India. Thank you so much, and thank you for having me on Republic. Following a tragic boat capsize in Vadodara that claimed the lives of at least 16 individuals, including 14 students, authorities have filed a case against 18 individuals in connection with the incident. One person died after a massive fire broke out in a container truck in Thane. The authorities have sent the mortal remains to the hospital for post-mortem. All Kamtapur Students' Union members blocked the railway line near Betkara railway station in Jalpaiguri, West Bengal. The Students' Union demanded for a separate state of Kamtapur. At the 54th meeting of World Economic Forum, Union Minister Smriti Irani lauded Prime Minister Narendra Modi's development mantra and said that in his 10 years of administration, PM Modi made women the center point of development. भारत की सबसे प्रमुख प्रतिभा भारत की महिला को नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के प्रशासन में विकास का केंद्र बिंदु बनाया। डावोस, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लगभग 5 दशकों से चल रहा है, यहां विश्व भर के सबसे बड़े व्यावसायिक समूह के प्रतिनिधि आते हैं। वर्तमान में इस डावोस में 300 से ज़्यादा भिन्न भिन्न राष्ट्रों के मंत्री आए हैं और जितने भी ग्लोबल पावर हाउसेस हैं वित्तीय दृष्टि से, वो डावोस में आकर नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं। Amid the freezing temperatures in our national capital, Indian forces prepare for the 75th Republic Day celebrations. The parade rehearsals are underway at Kartavya Path in New Delhi. With temperatures staying low, Delhi experiences a cold wave and dense fog enveloping the national capital. The dense fog situation has caused low visibility, due to which several flight operations are delayed and few others have even been cancelled. The White House is closely monitoring the escalating tensions between Pakistan and Iran. National Security Council spokesperson John Kirby said that the White House does not want to see an intensification of conflict in the region.
UN Chief Antonio Guterres is concerned about the escalation between Iran and Pakistan and called for any issues between the two countries to be addressed through peaceful means, through dialogue and cooperation. Rockets between Iran and Pakistan. We've seen reports of casualties on both sides. Again, he urges both countries to exercise maximum restraint, avoid any further escalation. Any security issues. There right now, and we are getting you all the vibrant colors across Ayodhya. Chants of Jai Shri Ram right now. Jai Shri Ram. कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चाइना, क्योंकि यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। चलिए आते हैं फिर उसी गीत पर जिस गीत को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो चलिए मैं आपको वो गीत सुना रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम कथा सुनाते, ये है कथा सनातन मर्यादा संग्राम की, है ये कथा सनातन धर्म के उत्थान की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण। सभी का ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की। मगर लोगों के मन में जो टीस उठी है, मंदिर बनने में जो देरी है, उसके लिए एक लाइन है, अरे मंदिर बनने में देरी से हम राम भक्त शर्मिंदा थे, राम भक्त शर्मिंदा थे, मंदिर वही बनाएंगे प्रयास में हम सब जिंदा थे, प्रयास में हम सब जिंदा थे। जागा भारत सन 24 में मंदिर बन तैयार हुआ, मंदिर बन तैयार हुआ। 22 जनवरी राम भक्तों का सपना हर साकार हुआ, सपना हर साकार हुआ। मंदिर न बनता तो जिंदगी किस काम की, मंदिर न बनता तो जिंदगी किस काम की, ये गाथा है मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण। और तालियां, और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। देखिए अयोध्या पूरा ही नहीं, पूरा देश, पूरा दुनिया में पूरा राममय हो गया है कि चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। क्योंकि अब मंदिर बन गई है, इसके लिए मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि लो बन चुकी जन्मभूमि पर मंदिर श्री राम लल्ला की। बोलिए जय श्री राम। अरे अयोध्या तो एक झांकी है, बारी है अब मथुरा की।